हेलो, नमस्कार, वेलकम। एक्सपायरी की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं सहज अग्रवाल आज आपको मल्टीपल पैरामीटर्स, मार्केट का सेटअप कैसा है, टेक्निकल्स, एफआई पार्टिसिपेशन, ये सब डेटा पॉइंट्स को टच अपॉन करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक्सपायरी की बात की। ये कुछ रेलेवेंट डिस्क्लेमर्स हैं जी। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मंथली सेटअप फिलहाल के लिए पॉजिटिव चल रहा है। 25,740 के ऊपर मार्केट का बायस पॉजिटिव है। जब तक ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पर नहीं ब्रेक होता है तब तक हमें लगता है ओवरऑल मंथली सेटअप जो आपका नवंबर सीरीज का चल रहा है, सेंटिमेंट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस 26,100 एंड 26,300 पे हम देख रहे हैं। ये हो गया मंथली सेटअप। मीडियम टर्म सेटअप जो हम बड़े अवधि फॉर लॉन्गर टाइम फ्रेम हम देखते हैं, उसमें हमें अभी भी लग रहा है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है फिलहाल के लिए। मल्टीपल पैरामीटर्स हैं। टेक्निकली आई थिंक मार्केट का सेटअप काफी पॉजिटिव है, बट यदि हम फंडामेंटली देखते हैं तो वैल्यूएशंस, अर्निंग्स ग्रोथ, ये सब के थोड़े से कंसर्न्स फिलहाल के लिए नजर आ रहे हैं। बट ऑन द पॉजिटिव साइड ट्रेड डील होने की काफी हाई पॉसिबिलिटी है एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। सो देयर आर मिक्स्ड पैरामीटर्स दैट वी लुकिंग एट। But for the month, 25,740 is a key level that we are watching out for. Overall, today's day, in fact, even on the previous trading session was quite interesting. Previous trading session में last 1 hour में हमें काफी अच्छा move मिला after the sweeping political victory uh, of the ruling party. And today also there was a positive impact on the overall market, wherein your mid cap index did well. Nifty Next 50 also did well. Nifty 50, which is the top 50 stocks, relatively underperformed as compared to the broader market. But I think overall the bias continued to remain positive. In terms of sector, auto, consumer durables, and bank Nifty did really well, whereas IT, pharma, and metal were relatively underperformers. So सेक्टर रोटेशन चालू है, बट आज के दिन में हाई बीटा सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, सो दैट along with the broader market participating, इसके लिए हम कह सकते हैं कि overall the health of the market is more positively biased at this point of time. ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन की बात करें तो प्रिटी टाइट रेंज। यदि आप देखेंगे द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज एट 25,900 put and 26,000 call. So this basically gives you a very narrow range. Apart from this, the other open interest build up, though it might not be relevant, but on the put side is at 25,800, and on the call side it's directly at 26,500 odd levels. Though 26,100, 200 also have open interest build up, but the most relevant part are these two, which is 25,900 and 26,000. Maximum concentration is concentrated at ATM options for the index. So a tight range remains a possibility. And because 25.8 and 25.9 both have good open interest, in case agar aapka resistance level cross hota hai, so then there's a possibility of an up move playing out, because iske baad mein open interest hai, but it is not as aggressive as we are seeing in case of put options. मैक्स पेन वैल्यू इज एट 407 करोड़ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। मैक्स पेन वो पॉइंट है, यदि निफ्टी उस पॉइंट पे एक्सपायर होता है तो ऑप्शन राइटर्स जो बेच के बैठे हैं उनको मैक्सिमम फायदा होता है जितना भी प्रीमियम बाकी है, और बायर्स को मैक्सिमम नुकसान होगा। बायर्स वुड वांट द मार्केट टू मूव अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट, मैक्स पेन पॉइंट, whereas राइटर्स वुड वांट द मार्केट टू बी अराउंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। निफ्टी का क्लोजिंग है 26,013 का, मैक्स पेन का पॉइंट भी 26,000 का है, प्रीमियम 407 करोड़ का अभी भी थीटा डीके होना बाकी है। सो द प्रीमियम एट रिस्क इज अराउंड 407 odd crores. Since the inception of the current series, if you see consistently, there's been short addition on Nifty, and post the expiry session, inception of the November series, 66,500 contracts have been added on the short side in Nifty, whereas on Bank Nifty there's been mixed activity, but still 77 contracts have been added on the short side only. अदर इंडाइसेस के नंबर उतने ज्यादा नहीं है, इसके लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ज्यादा कंसंट्रेशन रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पार्टिसिपेंट वाइज एक्टिविटी को देख लेते हैं। सो दिस इज फॉर इंडेक्स ऑप्शंस एंड द अदर साइड इज फॉर इंडेक्स फ्यूचर्स। एफआई की यदि सबसे हम पहले बात करते हैं, नेट शॉर्ट ऑन इंडेक्स ऑप्शन, सिमिलरली नेट शॉर्ट ऑन इंडेक्स फ्यूचर्स। प्रो की यदि बात करते हैं, अगेन सेम net short on index options, marginal positive activity seen on index futures. Client side remains positive on index options as well as futures. The FI participation data, which is seen over here, has the long ratio has consistently been decreasing. We started with around 16%
इन दी नवंबर सीरीज, और वो धीरे धीरे जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर भी आया, दिस नंबर इज नॉट विटनेस्ड एन अप मूव, ये धीरे धीरे घट के 11.8% ही हुआ है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा कि एफआई की एक्टिविटी ओवरऑल नेट शॉर्ट साइड पे एडिशन ही हमें देखने को मिल रहा है. सो एफआई सीम्स टू बी रिड्यूसिंग देयर लॉन्ग exposure and increasing their net short exposure in the derivative index futures space. ये सिर्फ futures का डेटा होता है, इसमें options नहीं होते. ऑप्शंस में भी हम देख रहे हैं कि एफआई का शॉर्ट साइड पे है, तो क्लियरली आप ये बोल सकते हैं कि क्लाइंट लॉन्ग एंड एफआई शॉर्ट इज द ब्रॉडर situation that we are looking at in terms of the concentrated activity by participants. Yeah. ऑप्शन चेन एनालिसिस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. अगेन दी कॉल open interest concentration is seen at the 26,000 call, put side on 25,900. In today's trading session there was aggressive put writing seen, whereas call writing mein we saw reduction in positions. Put writing mein we saw addition, so put writing support is consistent over there. Similarly, after 25,900 we've seen 25,800 also, so this zone is a good support zone for the market. Overall weekly activity यदि हम देखते हैं तो 25 lakh 70,000 contracts on the put side and 23 lakh 50,000 on the call side. So overall the concentration is more towards the puts, but not much of a difference. Having said that, आज के दिन में जो major activity हुई है short build up की, वो आपकी put side पे ही हुई है, because the money flow is also suggesting that most of the money is moved towards put. And looking further into it, ATM put options, because 25,800, 25,850, 25,900 have witnessed significant addition. Whereas on the call side, if you see the change in open interest, right, it's not as significant. उल्टा वहां पे हमने in the money call options में जहां पे जिन्होंने short बेचा था उन्होंने positions cover ही करी है, and they've not shifted their positions on the higher side, they've just covered their positions. So basically suggesting कि जो रेजिस्टेंस दे रहे थे उन्होंने अपनी ऑप्शंस की पोजीशन थोड़ी काटी है एंड शिफ्ट नहीं करी है. सो दे आर आल्सो एंटिसिपेटिंग कि यदि कोई पॉजिटिव मूवमेंट आता है या सेटअप पॉजिटिव होता है तो ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं मार्केट में. या की लेवल्स बिफोर वी मूव ऑन टू द चार्ट्स. वीकली सेटअप इज पॉजिटिव. करंट वीकली एक्सपायरी का जो इंसेप्शन डे था लास्ट ट्यूसडे का, उसका लो नहीं ब्रेक हुआ है, व्हिच इज अराउंड द 25,450 मार्क. So that's one level. Momentum is expected about 25,030. Support level is placed at 25,900. So one level, if one wants to watch out for tomorrow's expiry session, that is 25,090, and momentum is expected about 26,030. And जो previous highs हैं, जो अभी ये जो correction चालू हुआ उसके पहले का high था was 26,100. Followed by all-time high of approximately 26,300. So these are the key levels. And one more thing, the monthly setup also remains positive, about 25,740, जो मैंने शुरुआत में भी आपके साथ शेयर किया. So इसके बाद में let's quickly shift to the charts. I think that will help us get a holistic view of whatever we discussed. So I'll just open the charts for your benefit. Yes, so that's the Nifty chart. Again, this is the larger time frame from 24 to currently 25. Resistance levels are marked in the dotted lines. The first resistance line is 26,100, followed by 26,300, and जो ये blue line है, dark line, that is suggesting monthly setup जो positive अभी फिलहाल के लिए होके रखा है, that is with the support of 25,740. Now, why this? How do we derive this level? I'll just spend few seconds on that. Basically, it's a combination of momentum and options positioning. So we don't look at one indicator in isolation. Momentum positive build up हुआ यहाँ पे, और साथ ही साथ में options का जो writing का data था उसमें भी saw some short covering happening, indicating that if this momentum sustains, then an up move can possibly continue, and that is why we've freezed our view that 25,750 के 40 के ऊपर जब तक सस्टेन करता है तब तक we would maintain a positive outlook on the market.
Now, shifting on to the expiry particular levels, what are the actionable points and what are the key levels that we're looking for? 25,900 is expiry minus 1 day low, which is very, very critical. ये टूटता है तो downside risk आपका open हो जाता है, and then you could possibly talk about a correction in the market. But इसकी possibility कम है because 25,900 and 25,800 both have significant open interest. Momentum for the week is positive, for the month is positive. So your key actionable points will be: one, if there's any correction towards the 25 950 mark, थोड़ा सा market आज जहाँ पे close हुआ है उससे नीचे correct होता है, then you can possibly consider a trading setup with a positive bias and maintain a risk level of 25,900 hourly closing basis. The other actionable point would be if Nifty manages to sustain above the high for a level of around 26,030. So इसके ऊपर यदि sustain करता है, then again you can have a positive outlook and you can expect the market to move towards the 26,100, 26,150 mark. All parameters seem to be broadly positive. What are the concerns? One is your FI segment have not increased their long exposure. They continue to remain net short on short positions increase करिए. Though that is just one parameter and cannot be used as a base to make the view. But we would rather go by the analysis and the a combination of multiple parameters, which is suggesting support 25,900, breakout above 25,030. So that's the broad view that we have for the expiry. Simple yet useful is what we believe, and hope that gives you clarity on the possibilities for the expiry setup for tomorrow's trading session. That's about it from my side. Have a great day today. Best of luck for tomorrow's trading session. This is Sehaj Agarwal signing off. Thank you so much for joining. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.